पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी का ऐलान कर देना चाहिए। जो मुल्क भी हमारी जमीनी, फजाई और बहरी हदूद की खिलाफवर्जी करेगा, हम न्यूक्लियर वेपन से जवाब देंगे। Two ideologies, two regions, one shared trajectory. Zionism in Israel and Hindutva in India are reshaping geopolitics with a common thread: religious nationalism. Now, the main question is, what are the historical roots, ideological overlaps, and the consequences of these ultra-nationalist agendas? Zionism emerged in 1897, founded by Theodor Herzl, born from the persecution of Jews in Eastern Europe. It called for a Jewish homeland in Palestine, but this ambition defied traditional Jews' religious teachings, which prohibit statehood before the arrival of Messiah. जो इस वक्त एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है इजराइल और इंडिया के दरमियान, ये आइडियोलॉजिकली एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और ये दोनों एक कंबाइंड थ्रेट बन सकता है पाकिस्तान के लिए, एंड पाकिस्तान शुड बी वेरी अलाइव टू दैट थ्रेट, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज वेरी अलाइव टू दैट थ्रेट। अब उसमें आप अपने गार्ड को लोअर नहीं कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप नेतन्याहू की स्टेटमेंट देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन, तो उसमें उसने ईरान की बात की और पाकिस्तान की बात की कि वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है और न्यूक्लियर वेपन नहीं है। पाकिस्तान में वो कह रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आ सकती है, तो एक थ्रेट बन सकता है उनके लिए। तो बहरहाल उनकी जो अपनी थ्रेट परसेप्शन है उसमें पाकिस्तान जरूर फिगर आउट होता होगा, और वो ये भी समझते हैं कि मुस्लिम ममालिक में अगर किसी के पास पंच है, किसी के पास कैपेबिलिटी है और किसी के पास एक प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्स है, तो पाकिस्तान है। तो इस तनाजुर में हमें अपने गार्ड्स को लोअर करने की बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए, और मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत को एयरफोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारी हुकूमत को जो है अपना एयर डिफेंस उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और मैं डंके की चोट पे एक बात पहले भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी का ऐलान कर देना चाहिए, और हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में इबहम नहीं होना चाहिए। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी फ्रांस की तरह यूँ होनी चाहिए कि जो मुल्क भी हमारी ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी हदूद की खिलाफवर्जी करेगा, हम न्यूक्लियर वेपन से जवाब देंगे। तब कहीं जाके आपको थोड़ा सा खौफ खुदा आएगा। हिंदुत्वा और यहूदी बीबी नेतन्याहू के जो यहूदी डिस्पेंसेशन है, इसमें किसी हद तक खौफ खुदा आएगा और आप सुख का सांस ले सकेंगे। अदरवाइज इंडिया इसी तरह स्टेज मैनेज करता रहेगा और स्टेज मैनेज में आपके खिलाफ चढ़ाई करेगा, और फिर वो जो समझते हैं कि न्यूक्लियराइजेशन के नीचे भी कन्वेंशनल लड़ाई की गुंजाइश मौजूद है, वो उस प्रेटेक्स्ट में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। The Jerusalem program, adopted in 1951, remains Zionism's guiding principle. It promotes Jewish unity, migration to Israel, defense against anti-Semitism, and the centrality of the Jerusalem. Over time, Zionists have split into two wings: the secularists and the right-wing religious nationalists, the latter dominating the modern Israeli policy. Right-wing Zionism today advances illegal settlements and the militarization of the religious sites like Al-Aqsa, and the policies denying the Palestinian equal rights. The recent Israel-Iran conflict, where Israel launched deadly strikes targeting nuclear and military sites in Tehran, Natanz, and Shiraz, killing dozens, including senior commanders, is a grim example of the Zionist aggression. Well, this actually reminds me of what Henry Kissinger once said: Israel has no foreign policy, only domestic politics. Now let's talk about Hindutva. Hindutva, on the other hand, coined by V.D. Savarkar in 1923, is the ideological backbone of Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Influenced by Mussolini and the Nazi regime, it promotes Hindu supremacy and defines India as a Hindu Rashtra. Savarkar dismissed Abrahamic religions and lumped Sikhism, Jainism, and Buddhism into a singular Hindu identity. The mindset fuels ongoing tensions in India today. Hindutva's impact is visible. The abrogation of the Article 370 in Kashmir, mob lynchings, CAA 2019, and the widespread demolitions of Muslim homes and mosques. India's support for Israel's recent strikes on Iran through its silence at international forums like SCO further aligns with its Zionist policies. Both nations are increasingly bonded through militarism and ethno-religious nationalism.
Zionism and Hindutva are deeply rooted in far-right ethno-nationalist ideology. They aim to ethnically and religiously purify their territories. Greater Israel for Zionists and Akhand Bharat for Hindutva supporters. Both regimes use state powers to enforce supremacy, distort history, and erase religious diversity, from saffronizing Indian textbooks to portraying Arabs as colonizers in Israel. Their narratives are designed to flame and divide. The Gujarat 22 massacre and the Vaza 2024 are painful parallels. According to the People's Union for Human Rights reports, 500 mosques and shrines have been demolished in Gujarat alone. India and Israel weren't always allies. India once supported Palestine and recognized the PLO early, but by 1992 it shifted to formal relations with Israel, seeking US alignment and access to cutting-edge defense technologies. Today, India is Israel's largest defense customer. They cooperate in cybersecurity, intelligence, space science, and even agriculture. In Kashmir, Israel's software and drones assist India's occupation. Meanwhile, India's laborers are replacing Palestinians in Israeli jobs aimed at the Gaza war. The alliance has inspired global far-right extremists. Anders Breivik, who killed 69 people in Norway in 2011, praised Hindutva in his manifesto. The world is watching as these ideologies normalize human rights abuses. The US-China rivalry adds complexity to the situation. As net security providers, both Israel and India are use this alliance to solidify power. But at what cost? Multiculturalism and peace hangs in the balance. Zionism and Hindutva are more than ideologies. They're existential threats to religious harmony and global peace. To ignore them is to enable them. The world must act before Gaza and Kashmir become permanent wounds. Stop fascism, support justice, amplify solidarity.